सो 4 तारीख को जो मैंने डिसाइड करा था मैं कितना अप्लाई कर पाया, ये मैं बताने जा रहा हूँ एंड इट इज़ प्रिटी एक्साइटिंग. टुडे इज़ 6th of November. 5 तारीख को मैंने अलग से ऑडियो जर्नल रिकॉर्ड नहीं करा, ऑल्दो मैं करना चाह रहा था पर मैं कर नहीं पाया. तो मैंने सोचा कि 5th और 6th का मैं एक ही बना दूँगा. सो हियर इट इज़ माई सेकेंड ऑडियो जर्नल. दिस इज़ NS810. और जैसे कि फर्स्ट ऑडियो जर्नल में आई डिसाइडेड कि मुझे किस तरीके से अपने ऊपर फोकस करना है एंड किस तरीके से आई हैव टू ट्राई नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, किस तरीके से मुझे सोशल मीडिया का यूसेज कम करना है. सो इट स्टार्टेड द 5th of November started pretty well. That day I was very dedicated and I was like कि ठीक है, let's do this thing. And so I started off by doing something and which I was long thinking कि भाई बहुत टाइम से करना है, and I did it. तो मुझे बहुत अच्छा लगा and half of the day went like that. I did all those stuffs which I planned and it was pretty good. So it was fine, but then on and even in the evening मैंने पूरे दिन आई यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली. बट उसमें जो एक गड़बड़ हो रही थी वो ये थी कि आई वॉज नॉट I was still using, I'm sorry, I was still using social media a lot. So this was what I was facing. I was out most of the day. तो बट जब भी मुझे टाइम मिल रहा था बाहर भी तो I was using social media. So this was one of the problem which I was not able to correct. तो सोशल मीडिया का जो मैं यूज़ कर रहा था उस वजह से हुआ क्या कि जब तक मैं बाहर था, जब तक मैं काम कर रहा था, तब तक एवरीथिंग वाज वेल एंड आई वाज फीलिंग वेल. आई वाज गेटिंग लेस डिस्ट्रैक्टेड टू एनीवन. बट लेटर इन द इवनिंग व्हेन मेरा काम पूरा हो गया एंड आई वेंट टू टेक सम रेस्ट, तब वापस वो चीज़ शुरू हो गई. तो एंड 2-3 घंटे तक मेरा दिमाग देन अगेन फिर से वो सब चीज़ें होने लगा कि यार कि अब अभी वापस मतलब मैं वापस इंस्टाग्राम चलाने लग गया एंड इधर से उधर स्क्रॉल करे जा रहा हूँ एंड अगेन वापस डिस्ट्रैक्टेड सा फील होना शुरू हुआ. तो दैट वाज वेरी बैड. फिर जो रात के लिए मैंने प्लान करा हुआ था कि मेरे को रात को करना है, वो मैं नहीं कर पाया. सो बेसिकली it's not like कि when you plan something and you start to do it will go as you plan. और हुआ क्या, मेरे को रात को एकदम से, अब मेरा दिमाग देखिए कितना कि मेरे को कुछ एकदम से इतना ज़्यादा अंदर से आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, बट एक अंदर से बार बार फील आ रहा था कि लाइक बार बार पूरे दिन नहीं आया बट देन रात को आने लगा. एकदम से मैं रात को 1 बजे उठा हूँ और एकदम से मैंने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया. एकदम से मैंने मैसेजेस कर दिए 1-2 लड़कियों को और कि कैसे हो, और पता नहीं क्यों कर दिए बट इट्स जस्ट पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हुआ मेरा उस वक्त रात को. एंड फिर मैं अपना इट वाज वेरी स्टूपिड और कुछ भी देखे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, बट मतलब बिकॉज दैट वाज लाइक कि एकदम से मुझे पता नहीं रात को एकदम से बेचैनी सी हो गई कि यार क्या हो रहा है. ऑल डे वेंट फाइन एंड येट जस्ट बिकॉज आई लूजेंड माई फोकस फॉर मे बी हाफ एन आवर, उस वजह से अगेन आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. तो देन मेरे को रात को 1 बजे से 3 बज गए एंड आई नो 3 बजे एट लास्ट आई वाज लाइक यार दिस इज़ स्टूपिड, रियली स्टूपिड. एंड
and thanks to God, I just stopped and I slept. देन नेक्स्ट डे बिकॉज मैं रात को नहीं ढंग से सोया तो मैं सुबह उठा भी, बट देन आई रेस्टेड अ लिटिल मोर. एंड yesterday was then again because मैं सोचता रहा कि मेरे को ऑडियो जर्नल भी बनाना है 5 तारीख का, बट मैं वो नहीं बना पाया. तो सी आई वॉज लाइक ऑल डिस्ट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाफ आवर अ डे बिफोर जो मैंने 5 तारीख को शाम को लगाया, तो उस वजह से हो गया डिस्ट्रैक्टेड. और वो एकदम से रात को एकदम से हो, जैसे होता है ना किसी चीज़ की हुड़क सी उठती है, तो एकदम से रात को एकदम से ऐसे हुआ कि एंड उस वजह से अगला दिन ख़राब होना शुरू हो गया. तो इट हैज़ इट्स चेन रिएक्शन. Then 6th of November was pretty much, idiocity. It was a Sunday, so I was like, I slept. Then I had to go. Um, yeah, I was just down. I was down. घर में सब पूछ भी रहे थे कि what has happened. I was like, क्या ही बताऊँ मैं, और क्या ही तो कोई सुनने ही वाला है बैठ के. तो आई वाज लाइक ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. लेटर इन द इवनिंग फिर मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ बिकॉज आई वाज लाइक नॉट यूजिंग माई फ़ोन एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्क एंड दैट वाज नॉट प्लान्ड. बट सो मीनवाइल एक चीज़ और मैंने नोटिस करी. आई वाज थिंकिंग अबाउट माई एग्जिस्टिंग सर्कल. तो मैंने सोचा यार, there's a friend of mine, she's a girl, and she's like she thinks and she says that we are like best friends, and yet all the time, every time she's like only, she never asks कि how the hell am I doing or everything and anything sort of that. She's just मैं मैसेज मैं कभी मेरे को ज़रूरत भी कभी रही पहले कभी, मैं I just kept asking for help, and she was like least bothered about all those things. She never really cares, but so but whenever she requires me, I have tried to be always there. So um इवन डे बिफोर येस्टरडे तो उसको रात को मैसेज आया हुआ था 12 बजे, मैं जो जनरली कभी नहीं आता, येट आई रिप्लाइड एंड टॉक्ड बिकॉज शी वॉज फीलिंग डाउन. सो बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग, आई वाज कुकिंग एक्चुअली. तो कल शाम को जब 6 तारीख की शाम को, अब मैं 7 की सुबह को ये ऑडियो जर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कल शाम को जब आई वॉज cooking, so I was feeling really better. So I was feeling better. I was doing something I like doing, and um, I get off, मेरे दिमाग से वो चीज़ हट रही थी. So I felt better, and then I realized that why I am making audio journals, and that's good, but why वो मेरे को बेस्ट फ्रेंड बोलती है, तो वाई शुड नॉट आई बी एबल टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद हर टू. तो देन आई रियलाइज दैट मतलब शी इज़ जस्ट काइंड ऑफ वेरी मीन. तो आई मीन वाई शुड आई इवन वेस्ट माई टाइम इन टॉकिंग टू हर, टू हेल्प विद हर. बट वो सोचे यू हैव टू रियलाइज somebody is always there for you, and you never even ask how the hell is other person thinking. It's just really very mean, very selfish, self-centered. So why the hell should I talk to her? So I just I blocked her. So yeah, I just blocked her from, like without any intimation, without anything, because कुछ मैं कुछ भी बोलूँगा there will be an explanation or everything. So I just thought to hell with her and just blocked her from everywhere. And इट्स ओके. एंड आई थिंक मैं वैसे भी उसको कुछ कभी कुछ शेयर कर तो पाता नहीं था. आई वॉज हर डम्प स्टेशन, कि आओ और अपना कूड़ा इधर डाल के चले जाओ. एंड ऑलवेज गिविंग एडवाइसेस. मेरे को तो एडवाइस भी नहीं मिलती थी किसी भी चीज़ में. तो आई मीन ठीक है, यू कांट बी जस्ट टू मीन, टू सेल्फिश. देयर इज़ अ लिमिट. यू हैव टू also care about the other person. And I can just keep helping, and yet
feeling all alone, and she never even asked. So I was like, this is. I just blocked it and it felt better, and so it is. Now yesterday, after after evening, I felt really better because I was able to do my work. I started to do, you know, कुकिंग. सो इट जस्ट फ़ोन साइड में रखा होता है, उस टाइम पे मैं चलाता नहीं हूँ, तो इट फेल बेटर. आई एट प्रॉपरली, आई स्लेप्ट प्रॉपरली. सो या, now now it feels better. So what I'm thinking now is, you know um, also I have to add one thing, that last night I also messaged this my the girl I used to like. So I messaged her as well, and I think so that also helped, because right now, because I messaged her, and my all that waving waving attention is now focused on one point. So that is also kind of helping. बट आई इट इज़ टू अर्ली टू जज कि जो मेरी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी और लड़कियों में हो जगह, वो अभी इधर टिक पाएगी फिर से या नहीं टिक पाएगी. बट आई रियली होप वो होए. ऑल दो मैं आई एम नॉट रिलाइंग कि वो कुछ उसका ढंग से वो बात करे ना करे या कुछ होगा नहीं होगा. बट स्टिल एनी वे आई जस्ट want myself to be more focused. So I'll keep trying stuff, whatever will help me. So, so now today is 7th of November, and I'll see how how today's goes, and will try कि मैं हर रोज audio journal बनाऊँ, so that it should not be long. And um, okay, if you have listened me till here, and if you have any suggestions, if you think, if you have any question, if you have anything to share, you can share in the comments if you have heard this. And I'll see you tomorrow. Take care. Bye.